So Jai Hind everyone. So as you know that yesterday we have covered internal security in which we have gone through all the what is internal security and what is external security. We have discussed about all and classification of a threat, how many type of threat for the country. We have discussed this all and attributes of internal security. So today we are going to talk about the major challenges of internal security. So as we know that after getting independence, we have come across lot of many problems. For example, uh, state of जम्मू कश्मीर में काफ़ी दिक्कतें and then that is a time when India divided into two countries, Pakistan and of course one India. So at that time we have faced lot more difficulties in establishing each and everything because it's like a born baby, it's like a newly born baby. So a lot more things has to be done for the upliftment of the of that country after independence. There is a lot more problem also. For example, after independence we get to see that uh, lots of multiple riots and interstate problem dispute and communal violences because of a caste and religion and riots because of interstate boundaries and because of linguistic basis also. So after independence we got a lot more problems in different kind of problem. For example, whether it's about linguistic basis, whether it's about religious basis, whether it's about religion, reason is interested boundary basis. So today we are going to talk about the major challenges of internal security. So first of all, let me tell you that what are the major challenges for the internal security of the India. So let me tell you that which type of major challenges is for the our country India. So first one is like Jammu and Kashmir militancy and terrorism. Second is insurgency in the northeast India. As we know that in northeast India there is a lot of foreign peoples come to stay over there, and because of that they are disturbing the natural demographics of that particular place. Okay, left wing naxalism and left wing extremism and naxalism, hinterland terrorism, the terrorism across the mainland of a country, organized crime and its nexus with the terrorism, communalism, caste and ethnic tension, regional and inter-caste dispute, cybercrime and cybersecurity, border management, and coastal security. So these are the major challenges for the country India. So the 1950 also saw the northeast going up in flame when it 1954 Angami Japu Fizo raised the banner of a revolt in Nagaland and the fire spread to the Mizoram, Manipur and Tripura. तो 1950 में क्या हुआ था कि नॉर्थ ईस्ट जल रहा था काफ़ी, अभी भी जल रहा है. देयर इज लॉट मोर प्रॉब्लम ऑफ नॉर्थ ईस्ट, बट आई थिंक गवर्नमेंट इज नॉट पेइंग अ प्रॉपर अटेंशन as much as he has to pay, or the government has to pay that much attention for the northeast. When in 1954, I think his leaders of northeast Angami Japu Fizo raised banner of a revolt in Nagaland, और all the three sisters मिजोरम, मणिपुर एंड त्रिपुरा, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बवाल हो गया था, काफ़ी ज़्यादा फायर हो गया था. द लेटर पार्ट ऑफ 1960 saw the rise of नक्सलिज्म. फिर 1960 में हमने नक्सलिज्म का राइज दिखा इंडिया में. ओके, नक्सलिज्म का राइज दिखा इंडिया में. एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया वॉज an underdeveloped country and had taken up the task of rebuilding itself. So as we know that when India get independence, it's like a born baby, और एक born baby के लिए ग्रो करना काफ़ी मुश्किल होता है, काफ़ी समय लेता है. सो दैट्स वाई इट्स टोटली it is like a task for our country India to develop, to grow. So it's like a task. The country adopted the equitable and inclusive growth model for the growth and development, but
over the year, it has become evident that we have failed on many counts, and poverty, unemployment, underdevelopment prevail in the country. So after independence, we have taken a lot more lot more things to develop our country, to develop our nation. But the problem is that because of a poverty, because of lot more poverty and unemployment and underdevelopment which is prevailing in our country India, because of that we have faced a lot more problem in growing the country India, and for in the growth of a country India. So poverty and unemployment and underdevelopment, this all plays a very important role to just stop the growth of India. At that time, uh, is poverty and unemployment and underdevelopment is prevailing in country at a very large scale. Various people exploit this situation and pose a very dangerous challenges to the country. Internal security in the form of Maoism, Naxalism, left-wing extremism. In 2026, the then Prime Minister Manmohan Singh even admitted that this was perhaps the biggest challenge to the country internal security. तो जैसे ही भारत हमारा आज़ाद हुआ उस समय हमारे पास काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस थे देश को ग्रो करने के लिए, बिकॉज इट्स लाइक अ बॉर्न बेबी। एक छोटा सा बच्चा ऐसे पैदा होता है तो उसे बड़े होने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, ही हैज़ टू फॉल डाउन लॉट मोर टाइम टू स्टैंड ऑन हिज ओन लेग। तो उस समय हमारे देश में काफ़ी ज़्यादा गरीबी और बेरोजगारी और अंडर डेवलपमेंट था, क्योंकि अभी अभी नया नया देश आज़ाद हुआ था। सो बिकॉज ऑफ दैट उसको फ़ायदा उठाते हुए बहुत लोगों ने उस समय मॉइज़म और नक्सल और लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म ने काफ़ी ज़्यादा जो कि देश में अपना जगह बना लिया था। सो एट दैट टाइम इन 2006, द प्राइम मिनिस्टर was मनमोहन सिंह, एंड he is told that दिस टाइम द बिगेस्ट थ्रेट टू इंटरनल सिक्योरिटी इज नक्सलिज्म, क्योंकि नक्सलिज्म उस समय काफ़ी नया नया प्रचलित हुआ था। तो सबसे बड़ा इंटरनल सिक्योरिटी सबसे बड़ा चैलेंज नक्सलिज्म से था एट दैट टाइम। इन 1980 विटनेस द ग्रोथ ऑफ अ टेररिस्ट मूवमेंट इन पंजाब, एडेड एंड एवेटेड बाय द हॉस्टाइल नेबर। फिर उसके बाद 1980 में हमने पंजाब में टेररिस्ट अटैक भी देखा, टेररिस्ट मूवमेंट जो भी हुए। द 1990s आर द बिगिनिंग ऑफ मिलिटेंसी इन कश्मीर। 1990 में फिर हम लोग को मिलिटेंसी देखने को मिला कश्मीर में। वी स्लोली बिकम अ पैन इंडिया फेनोमेनन विद एन ऑनस्लॉट ऑफ इंटरनेशनल टेररिज्म इन द हिंटरलैंड ड्यूरिंग द पास्ट डिकेड। तो धीरे धीरे हमें पूरे पैन इंडिया में फेनोमेनन देखा, बहुत जगह बॉम्ब ब्लास्ट हुए, बहुत जगह टेररिस्ट अटैक हुए। सो दिस ऑल थिंग्स आर स्टार्टेड हैपनिंग एट दैट टाइम in entire country of India. The rise of Indian Mujahideen IM and Popular Front of India have ended dangerous phenomenon in last decade. और फिर उसके बाद लास्ट दशकों में हमने देखा कि कुछ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन लाइक इंडियन मुजाहिदीन और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, ये सब भी बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट इंडिया में, जो कि इनका भी आतंक फैलना स्टार्ट हो गया। This was supported by an unfriendly neighbor that has become during the 26/11 terror attack in Mumbai 2008. As a result, the century initiated several concrete measures to strengthen its anti-terrorism approaches. And after that, उसके बाद 2008 में हमने 26/11 अटैक देखा, and just because of that, government has taken a lot of a measure to prevent the anti-terrorism which is prevailing in our country. So उसके बाद सरकार ने टेररिज्म के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस किया, काफ़ी ज़्यादा दे हैव प्लेड इम्पॉर्टेंट रोल टू कंट्रोल इट इन कंट्री। ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम माफियाज हैव गिवन फर्दर बूस्ट टू इंटरनेशनल टेररिज्म बाय फॉलोइंग लिंकेज बिटवीन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम टेररिज्म। और उसके बाद जो है कि ऑर्गेनाइज क्राइम भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगे, एंड देन लॉट ऑफ लाइक माफिया, जो भी रीजनल माफियाज थे देश के अंदर, उनका भी कनेक्शन बाहरी देश के लोगों से होने लगा, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट इट्स ऑल्सो अ बिग चैलेंजेस टू आवर कंट्री इंडिया। Their funding and modus operandi have mainly been arms smuggling, drug trafficking, hawala transaction, money laundering, and pumping of a fake Indian currency to different part of the country. फिर जो माफियाज होते थे उनका जो फंडिंग होता था बाई
आर्म स्मगलिंग, आर्म को स्मगल करके, ड्रग बाय ड्रग ट्रैफिकिंग, हवाला ट्रांजेक्शन, दिस ऑल दे आर डूइंग टू मेक मनी एंड आफ्टर दैट दे यूज इट इन some different way for disrupting the internal security of our country. साइबर सिक्योरिटी इज द लेटेस्ट चैलेंजेस, और अभी 2008 के बाद फिर उसके बाद हमारे पास सबसे बड़ा जो चैलेंजेस समय आया, दैट इज साइबर सिक्योरिटी. We should be the target of the cyberware, which could jeopardize our security, as most of our vital installations are now based on cyber system. Any failure to check cyber attack could be fatal to our economy and security. The Snowden revelation 2013 exposed the extent of espionage that is possible through cyber network. The phenomenal growth of internet and mobile communication has demonstrated that social media could play a vital role in spreading misinformation and fanning violences. तो साइबर सिक्योरिटी जो कि अभी सबसे बड़ा थ्रेट है हमारे नए इंडिया के लिए, बिकॉज एज वी नो दैट पीपल्स आर यूजिंग लॉट मोर सोशल मीडिया, लॉट दे आर इंस्टॉलिंग लॉट मोर एप्स. तो आज के समय में कोई भी मिस इन्फॉर्मेशन पहुंचाना बहुत ही आसान हो गया है. एंड बिकॉज ऑफ द र्यूमर देर इज गोइंग टू बी अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू रिलीजन, टू एथनिक पीपल, टू डिफरेंट एथनिक पीपल, टू डिफरेंट कास्ट पीपल्स. तो एक गलत मिस इन्फॉर्मेशन कैन लीड लॉट मोर challenges to our internal security, and because of the rumor. ठीक. The exodus of a northeast student from the southern state in 2012 and the Muzaffarnagar riot in 2013 are some example of problem created due to the fast growing communication system. और अगर देखें तो हम लोग नॉर्थ ईस्ट के बच्चे जो साउथ में गए थे उनको वहाँ से भगा दिया गया. फिर उसके बाद मुजफ्फरनगर में जो दंगे हुए थे 2013 में. So this all are the consequences of a rumor, misinformation, spreading misinformation because of that. As a conventional warfare is not able to give the desired result, the enemy will use other means to achieve its nefarious design, targeting civil society to create political instability, exploiting social, economic, religious, and sectarian fault lines, and mounting perception battle using psychological war. तो अभी क्या हुआ कि नाउ अभी जो हमारा एनिमी देश है, जो भी हमारे दुश्मन राष्ट्र हैं, दे आर नॉट they have not that much power to confront us from directly from in front in in conventional warfare. मतलब सामने से अब युद्ध करने का उनके पास जब पावर नहीं होता, या बोलिए इकोनॉमिकल बजट नहीं होते हैं, या फिर दे डिडंट हैव गट्स टू फाइट विद एनी कंट्री विद डायरेक्टली, तो क्या करते हैं कि साइकोलॉजिकल वार छेड़ते हैं. साइकोलॉजिकल वार में क्या होता है कि लोग आपके देश के अंदर कुछ र्यूमर या किसी दो समूह में कुछ र्यूमर फैलाकर लड़ाई करवा दें, एंड बिकॉज ऑफ दैट द इंटरनल पॉलिटिकल स्टेबिलिटी गॉट डिसमेंटल्ड, डिसरप्टेड. तो अंदर की पॉलिटिकल जो भी स्टेबिलिटी हो क्या हो, खतरे में हो जाए, और उसकी वजह से दंगा, मार पीट और तरह तरह के जो कि गलत गतिविधियाँ हों. सो दिस आर द न्यू मॉडल्स ऑपरेंडी ऑफ अदर कंट्री टू मेक कट इन डिफरेंट सेट्स. ठीक है. तो साइकोलॉजिकल वार को ज़्यादा इस समय प्रीफर कर रहे हैं ताकि देश के अंदर इंस्टेबिलिटी हो. This could be termed as a fourth generation warfare, where the background could be civil society with the aim to recruit, destroy, and subvert civil society itself. Now, the concept of conquering land is being psychological operation, and one who controls civil society would ultimately rule the world. Another big problem is these groups are globally networks as opposed to Indian police, which find it difficult to even networking at a national level. तो अभी लोगों का जो दूसरे एनिमी कंट्री हैं उनका मोडस ऑपरेंडी है कि देश के अंदर ऐसा पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी क्रिएट किया जाए विद द हेल्प ऑफ एनी र्यूमर, विद द हेल्प ऑफ एनी मिस इन्फॉर्मेशन, विद द क्रिएटिंग कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू रिलीजियस या एथनिक ग्रुप, ताकि देश के अंदर का जो स्टेबिलिटी हो, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो, वो ख़त्म हो जाए, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट ग्रोथ रुक जाए, और ऐसे किसी भी देश पे कंट्रोल किया जा सकता है बिकॉज ऑफ दैट. नाउ विल टॉक अबाउट द बॉर्डर मैनेजमेंट.
Border management is important for containing threat to our internal security. A weak border management can result in infiltration of terrorists and illegal immigrant from the various border and smuggling of a contraband items such as armed drugs, counterfeit currency. There has been an increase in hostility against illegal migrant in Northeast. We are at to find a satisfactory solution to be political, social, economical to this problem. So we border management is also very important इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस. अगर किसी भी देश का बॉर्डर प्रॉपरली मेंटेन नहीं होगा तो वहाँ पे इन्फिल्ट्रेशन ऑफ फॉरेन पीपल्स या इन्फिल्ट्रेशन ऑफ अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन वहाँ से इन्फिल्ट्रेट कर सकते हैं बहुत आसानी से, किसी भी देश के अंदर जा सकते हैं. And because of that they create a very hostile environment inside the country and they can disrupt the internal security. तो इसकी वजह से और दे कैन इस स्मगलिंग कर सकते हैं ऐसे काफ़ी नशीले पदार्थों का, जैसे ड्रग्स हो गया या फिर काउंटरफिट करेंसी ये सब प्रॉब्लम हो सकता है. एंड बिकॉज ऑफ दैट अगर बॉर्डर मैनेजमेंट ख़राब है तो इसकी इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा इनस्टेबिलिटी हो सकती है समाज के अंदर, देश के अंदर, ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द लेवल ऑफ इकोनॉमिक, सोशल, सोसाइटल एंड लॉट मोर या पॉलिटिकल. काफ़ी दिक्कत हो सकता है अगर बॉर्डर मैनेजमेंट काफ़ी कमज़ोर है. सो दिस इज़ ऑल्सो मेजर challenges for our country India. Step should be taken to regulate and migrate security risk related to the drones. Being relatively cheap, compact, and small drone have been regularly radar systems are not meant for detecting low-flying object. Ministry of Civil Aviation has issued national counter-refuse drone guidelines to deal with the refuse drone. So that's why nowadays what happen, every countries are putting implementing drone for their border management so that they can surveillances each and every small step whatever the things is happening near the border. So these are the initiatives of the country so that they can keep their eye open near the border, because border securities play a very important role for the country security. Because if the border security is very weak, then there is going to be infiltration of terrorists and smuggling of drugs and fake currency. So it's going to directly indirectly affect the country's political system, economic system, and social system, and it will create instability inside the country. So that's why government are using drones which is very cheap in prices and very low cost to put eye on the border. These are also non-traditional, non-military threat to the security. This climatic security, disease and epidemics, energy and water, food resource resolve vast poverty and economic disparity. These have not been included in the food book. So as we know that अब नॉन ट्रेडिशनल युद्ध होता है, फॉर एग्जांपल क्लाइमेटिक सिक्योरिटी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड डिजीज एपिडेमिक्स. अभी कोरोना के बारे में ही बात हो रहा था कि दैट इट इज़ spread by some enemy country, but it is not like that. But in future there is biological weapons also, like any country can use biological weapons for destructing the other country. So this is also major challenges for the any country to look after this. Okay, now we are going to talk about a factor responsible for the internal security problem. So what are the factors which are responsible for the internal security problem? Few of the root cause are as follow. First of all, unfriendly neighbor. If there is an unfriendly neighbor, then it is going to be biggest threat for the internal security. आप ऐसे मान लीजिए जैसे अगर आपके बगल में जिसका घर है, आपका पड़ोसी जो भी है, अगर उससे आपके संबंध अच्छे नहीं हैं, बहुत अच्छे नहीं हैं, तो इट मे बी पॉसिबल दैट वो कुछ भी कर सकते हैं. सो यू शुड हैव अ फ्रेंडली नेबर्स. तो अनफ्रेंडली नेबर्स पहला थ्रेट. दूसरा पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, inequitable growth, widening gap between have and have not, failure on administrative front or governance deficit, increasing communal divide, rise of a contentious politics based on a sectarian, ethnic, linguistic, or other division criteria. Porous border have very tough terrain,
poor criminal justice systems and large scale corruption leading to nexus between criminal police and politician, resulting in organized crime going unabated. We inherited the first three causes at the time of our independence but have failed to resolve them fully. Unfortunately, we have added more factors which have multiple or internal security problem. The fourth, fifth, and sixth factor, the list termed as administrative failures, seventh, eighth, and ninth could be used to rise. Oh, the electricity has been gone, so I have to stop the video for next. We will discuss in the next video.